Hello everyone, welcome to Reading and Writing Filling the Blanks number 29. It means that we have already discussed 28 highly repetitive and real exam occurring reading and writing filling the blanks and have discussed the hacks, strategies and tips to solve them. So first things first, now PT is accepted for UK. So if you want to go to study in UK or Canada, because 90% of Canadian universities also accept PT now, so you can achieve your dream through PT. And PT Home, which is a new test, is accepted and approved for family visas in UK. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. In this series, we discuss the tips and tricks to solve our reading blanks, reorder paragraphs, reading filling the blanks. So that's why do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. PT reading, most of the students know it is for 32 to 41 minutes and it has 5 question types. And the first question type is reading and writing filling the blanks. And it's most important for your writing and reading scores because you can get up to 22 marks in reading and up to 22 marks in writing just because of getting reading and writing filling the blanks correct. The strategy which we follow is that we try to solve reading and writing filling the blanks in 3 minutes. In that, क्या आपको सारे words पढ़ने होते हैं? The answer is no. You just have to skim the words, understand the gist. And we teach all these strategies to our students in detail, whether they are in our institute or taking online coaching from us. So this is today's blank. As usual, I'm going to give you 30 seconds to go through this, skim through this, and then we are going to discuss it. Okay, so you know that first thing what we do is we skim for understanding the tone, gist, as well as tenses. Gist means that we have to see the overall idea, tone positive है, negative है, neutral है या academic tone है, tense past tense है, present है या future है, and then we learn new words for vocab which I feel that are new for you. I explain those words to you. So let's get started with skimming. Our sense of cinema as site of commercial entertainment can be traced back to Brothers in 1985, their fee-paying public in Paris to sit and watch flickering images on an illuminated screen, the commercial Pandora's box they opened, world cinema at its peak, Hollywood yet in 30 years, miraculous construction was a complete audience really, films watched them, hence early decades of cinema was characterized by silent, there was lot of noise, audiences, musicians, commentators, even so, absence of human voice and something make the film seem rather strange when viewed by a modern audience. Okay. So we are talking about the movies of the past, how they started, they were silent, right? And now if there is no voice, it would be little odd, awkward to a modern audience, okay? So this was the gist. Now I have marked this word which is fee paying and it's using a hyphen. This is a grammar rule which we teach to our students that whenever there are two words which are acting as an adjective to some word to noun, public is a noun, fee paying is the adjective, so वो आपके hyphens के साथ combine होंगे. So this is an important rule which you must understand, realize. It's going to help you in writing, listening में summarize spoken text में. It's going to help you a lot. So I hope you are clear with this rule. And now flickering, what is flickering? जब हम कहते हैं flickering means wavering या फिर जब आपको पता है flicker होती है images, जब आपके टीवी पे जैसे flickering होती है, you can understand the context. Illuminated means light up, जब हम किसी चीज़ को light up करते हैं. Pandora's box, this is a common phrase. What does that mean? It means that
that a process which has once begun generates many complicated problems. Like जब हम कहते हैं उसने पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया, मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अब बहुत सारी complicated problems आएंगी. So that is what Pandora box is. Characterized means when we are describing the distinct features, मतलब हम किसी चीज के features को describe कर रहे हैं. So we have done the skimming, we have learned new vocab. So now let's start with the filling the blanks. And you know that for fill-ups, we read 3-4 words before and 3-4 words after. Okay. So in December 1895, they something forced, told, liked, attracted. So they are using past tense. Everything is in past. So there is no more or less like a grammar rule because all of them are using the past forms. तो अब हमें देखना है contextually क्या fit होगा, right? अगर grammar rule apply नहीं हो पाता तो we are going to see the contextual. अब forced, क्या आप किसी को force कर सकते हो watch करने के लिए images को screen के ऊपर जबरदस्ती बिठा सकते हो? The answer is no. And what we are doing now process of elimination, and I call this as our best friend forever, because what we do in process of elimination is we eliminate the wrong options and whatever we are left with would be the right answer. Now told, क्या आप सिर्फ किसी को कहोगे आओ और बैठो? ऐसा हो सकता है लोग बैठेंगे, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, सिर्फ बता के बात बन जाएगी? द आंसर इज नो. Liked, they liked a peeping, मतलब वो brothers, यहाँ पे they is a pronoun for Lumiere brothers. क्या वो उन भाइयों को पसंद है कि हाँ एक फी पेइंग ऑडियंस आ रही है और वो पे कर रहे हैं हम? द आंसर इज नो. दे अट्रैक्टेड, राइट? कंटेक्चुअली भी फिट होता है कि उन्होंने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया कि यार ये न्यू टेक्नोलॉजी है, लोग उससे क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस ब्लैंक विच इज अट्रैक्टेड. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द कमर्शियल पेंडोरस बॉक्स. अब आपने यहाँ पे देखा कि ये नेगेटिव की बात होती है जनरली हम जब पेंडोरा बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है? पर अब फॉरवर्ड रीडिंग से आपने समझा इन अ फ्यू इयर्स इनटू अ वर्ल्ड सिनेमा एंड इट्स पीक द फैंटास्टिकल हॉलीवुड. तो एक सिंपल सी बात है, कुछ नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब एक पॉजिटिव हुआ है. ठीक है, शुरुआत लोगों को नेगेटिव लगी, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स लगे, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई. ऑब्वियसली सिनेमा से रिलेटेड स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक जैसे इस यहाँ पे भी बताया गया, वॉइस नहीं थी, डिस्टर्बेंस थी, नॉइस थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉइस वगैरह. बट स्टिल अब लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फिल. अगेन टू के साथ है, आपको पता है टू के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या आईएनजी होता है, यूज होता है. तो एंड दीज आर ग्रामर रूल्स अगेन विच वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स इन डिटेल इन ग्रामर कोर्स. So to blossom in a few years, yes, it makes sense. Blossom खिलना, मतलब जो उन्होंने पेंडोरा बॉक्स ओपन किया वो खिला कुछ सालों में. कन्वर्ट कुछ यहाँ पे हम कन्वर्ट क्या होती है, एक चीज से दूसरी में ट्रांसफॉर्म होना, हम कन्वर्ट की बात कर रहे हैं. द आंसर इज नो. टू पॉपुलर डजंट मेक सेंस. टू पॉपुलराइज होता, वी कुड हैव सीन कि टू पॉपुलराइज इन अ फ्यू इयर्स, बट पॉपुलर डजंट मेक any contextual or grammatical sense. To leap in a leap is like jump, एकदम jump थोड़ी करेगा, like move करेगा. जैसे flower blossom होता है, धीरे धीरे problems ठीक होंगी और वो better खिलेगा, right? So the right answer over here is blossom. Moving to the next part, into a world cinema. अब a बहुत important है subject verb agreement के लिए. अ किसी के साथ लगा होता है तो क्या वो प्लूरल हो सकता है? द आंसर इज नो. और वैसे भी हम सिनेमा इंडस्ट्री की बात करते हैं, राइट? इंडस्ट्रीज तो हो ही नहीं सकता. चाहे आप मल्टीपल जगह की इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, इट्स लाइक अ कलेक्टिव नाउन, तो हमेशा इंडस्ट्री ही बात होगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन डजंट मेक सेंस. इंडस्ट्री बार बार मैं कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियलाइज तो पास्ट टेंस या पैसिव फॉर्म हो जाएगी. Into a world cinema industrialized भी sense नहीं बनेगा. The only thing which is going to make sense is industry, and it's meet the requirement of our subject verb agreement also. Because students generally confuse करते हैं industries और industry में. Because this is a, so that's why industries नहीं use हो सकता, singular ही use होगा, singular form ही use होगी. Moving to the next one. Yet in the 30 years in which the miraculous construction was accomplished, audiences really see. अब यहाँ पे 30 years की बात हो रही है. If you see forward reading से भी आप find out कर सकते हो यहाँ पे blossom क्यों आना था. लीप तो होता है एकदम जंप लेना, ठीक है? जंप थोड़ी हुआ है 30 years में.
कंस्ट्रक्शन अकम्प्लिश हुई है, अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट हुई है। ऑडियंसेस रेयरली टू फिल्म्स ओनली वॉच देम। अब आप मुझे बताइए फिल्म्स में क्या दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आप सुनते हैं और एक आप उसको देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ देख पाते थे, एंड अब यहाँ पे रेयरली हियर टू फिल्म्स। डज इट मेक सेंस ग्रामेटिकली? द आंसर इज नो। सी हम कभी भी सी नहीं यूज करते बिकॉज दीज आर आर स्टेटिव वर्ब्स पार्ट ऑफ आर ग्रामर कोर्स, राइट? हम हमेशा क्या कहते हैं? वॉचिंग अ मूवी, कभी सी या सीइंग अ मूवी नहीं कहते हैं, ओके? दीज आर आर स्टेटिव वर्ब, तो सी नहीं यूज हो सकता। अब हैड टू व्यू और सी, सेकंड रीजन क्या है क्यों नहीं यूज हो सकता? ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं रेयरली सी टू फिल्म्स, ओनली वॉच देम, डजंट मेक सेंस। वॉचिंग वाला एस्पेक्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो व्यू और सी भी एक ही मीनिंग बनता है, राइट? सो व्यू नहीं हो सकता क्योंकि वॉच ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज had to listen, and it makes sense also because if you see from forward reading, because हम यहाँ पे silent movie absence of human voice की बात कर रहे हैं, तो और इतना आपको थोड़ा सा अगर common knowledge है, you can understand that yes, पहले जो movies होती थी वो silent होती थी, audiences को background voice नहीं होती थी movies में, जो आजकल बहुत standard हो चुका है, okay? Now let's move to the next one. Hence, early decades of cinema was characterized by the title silent, right? So this is how you are going to justify the listen also based on forward reading strategy, okay? Now, something there was a lot of noise, machinery, commentators, musicians, even so the absence of human voice, okay? तो अब आपको पता है यहाँ पे आपको कॉमा है, पार्ट ऑफ आर ग्रामर रूल। कॉमा कहाँ यूज होता है? साइन पोस्टिंग वर्ड्स में। तो अब आप इनमें से साइन पोस्टिंग वर्ड्स कौन से लग रहे हैं आपको? यूजुअली और इनफैक्ट। क्यूरियस साइन पोस्टिंग वर्ड है? नो। क्यूरियसली होता फिर भी हम कंसिडर कर सकते थे। टू अंडरस्टैंड साइन पोस्टिंग वर्ड नहीं है। So we are just left with two words which are usually and in fact. That's why process of elimination and knowledge of grammar is very important to solve your reading and writing, filling the blanks. So usually किस चीज़ के लिए, मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशंस और जनरली के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे हम वही तो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे नॉर्मल कंडीशंस ही तो थी कि यूजुअली बहुत सारी नॉइस होती थी। बट फॉरवर्ड रीडिंग से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवन सो, मतलब what we are going trying to say is चाहे वो नॉइस होती थी तब भी absence of human voice, okay? So the right answer is in fact, and in fact का meaning क्या होता है? In fact has two main subparts or components. One is that it asserts the truth or emphasize the truth, कि मतलब कुछ सच्चाई तो बता ही रहा है, बट उसके साथ कॉन्ट्ररी भी होती है वो चीज जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है? मीन्स आप हम टाइटल साइलेंट था, राइट, पर कॉन्ट्ररी बहुत सारी नॉइज थी, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इन फैक्ट, बिकॉज एक ट्रूथ को तो एम्फोसाइज होकर ही रहा है, वो ट्रूथ कॉन्ट्ररी है हमारी एक्सपेक्टेशन से। अब अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं, यार वो साइलेंट मूवी थी, तो हम ये सोचते हैं कोई नॉइज ही नहीं होगी उसमें, तो या कोई आसपास कोई नॉइस नहीं होगी, लोगों की नॉइस नहीं होगी, मशीनरी की नॉइस नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। म्यूजिशियंस, पहले क्या होता थे, म्यूजिशियंस म्यूजिक, लाइव म्यूजिक प्ले कर रहे होते थे ऑडियंस के सामने, वहाँ मूवी चल रही होती थी, साइलेंट मूवी, और साथ में, और यहाँ पे म्यूजिशियंस या कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे होते थे, म्यूजिशियंस म्यूजिक प्ले कर रहे होते थे। तो ये एक आपके लिए कॉन्ट्रेरी टू दियर एक्सपेक्टेशंस बात हो रही थी, क्योंकि साइलेंट हमारे लिए था यार बिल्कुल म्यूट, जैसे हम टीवी म्यूट कर देते हैं वैसी होगी। नो, so that's why the right answer is in fact. एंड एक चीज ऑलवेज रिमेंबर, इन फैक्ट आर टू वर्ड्स, जब भी आपने राइटिंग में यूज करना है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट इन फैक्ट आर गोइंग टू बी टू वर्ड्स। नाउ लेट्स सी द लास्ट ब्लैंक. Even so, the absence of human voice and something make the film seem rather strange. अब आपको कंटेक्सचुअल फिल करना है, चाहे आपको वो कैप की नॉलेज है या नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें से मूवी से रिलेटेड टर्म कौन सी है? ग्रोन्स हैं, जिब्रिश है, गैप है, या डायलॉग है? इसको गिब्रिश नहीं, दिस इज जिब्रिश, दिस इज ग, दिस इज जी, दिस इज ग, राइट? ग्रोन्स, जिब्रिश, गैप।
अब आपको पता है डायलॉग ही होगा, मूवी से रिलेटेड यही टर्म इसके साथ फिट हो रही है. But still, as we have to improve our vocab, so let's see what are groans, what is gibberish and what is gab. Groans मतलब जब आप वॉइस मतलब एक आर्टिकुलेट करते हो वॉइस को पेन बताने के लिए, जिसको हम आहें भरना कहते हैं, like groaning. So we say please do not groan, stop groaning, right? Like that. What is gibberish? Gibberish mean meaningless speech or senseless speech. मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, आपको जब कुछ समझ नहीं आता, you say to people don't speak gibberish, I'm not able to understand this gibberish. तो मतलब senseless बात या फिर meaningless speech. And gab means to talk, or for chatter also gab is used. Okay, so I hope you are clear with these three words and your vocab has improved. So let's select the dialogue and see all the answers are correct or not. Yes, all the answers are correct. So that's why you need to follow a strategy to solve your reading and writing filling the blanks. Our strategy is based on context, lexical resource, and grammar. In context, you had seen the importance of skimming. Today we have solved some blanks on the basis of forward reading as well as tone. For lexical resource, collocations are important, phrasal verbs are important, and vocab is important. Vocab is something which you build with time, and we keep telling you new words in this video series. And for collocations, we have a very detailed document for our students, which we give them so that they can go through that document and can improve their knowledge about collocations. For grammar, we have a complete grammar course where we teach about parts of speech, subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular words, British English rules, and sentences. So we had seen the hyphen rule. Remember that was British English rule. Signposting words comma के साथ use किया था. We could solve one blank, and parts of speech are important, and one blank we could solve today on the basis of सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहाँ पे हमने ए के साथ इंडस्ट्री सिलेक्ट किया था बिकॉज वहाँ पे ए यूज हुआ था. And always remember, you have 2.5 to 3 minutes to solve your blanks. In first 30 to 60 seconds, you have to skim the content. In 90 to 120 seconds, you have to look for clues. You have to find pointers and use process of elimination. Process of elimination is your best friend forever. And all the strategies which we teach are validated and proven strategies. The scorecards which you can see in the ticker below are the proof that our students achieve their target scores, and these are some of our success stories where students have scored even a perfect score of 90. If you have any question, any doubt, you want to take online coaching or in-institute coaching, you can WhatsApp us at 8699 121 121. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dream.